Why should I study history? How is history useful? क्या काम आएगा हिस्ट्री? हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? Sounds like your questions, right? I know you have these questions about history, right? So let us understand what is applied history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the present and future times. Applied history is the field of study, right? History जो है कोई भी subject, it's a field of study, right? हम उसे पढ़ते हैं. So it's a field of study concerned with the application of history. Applied application, right? Applied, apply करना, right? Apply किया. So application of history किसके लिए? For the benefit of people in the past? No, for the benefit of the people in the present and future times, right? So जो history है, applied history है, वो किसके बारे में है? It's a field of study. एक पढ़ाई का एक branch है. It's a field of study concerned with the application of history. Applied history, application of history. Why? For the benefit. उसमें से फायदा होना चाहिए. किसे? जो लोग अभी है और जो फ्यूचर में होंगे, right? Not the people in the past, because they've already gone. The history has happened at that time. So we have to use history for the benefit of the people who are present now and for the people in the future, right? So अगर आप definition को ऐसा break down कर लोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा. You can repeat with me. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the present and future times. Easy, yeah? Okay. So making history meaningful and helpful, but कैसा? हम बोल रहे उसको meaningful बनाना, उसको helpful बनाना, but कैसे बनाएंगे उसको? So, first thing, knowledge of history can help find solutions to contemporary social issues. Okay, हिस्ट्री में से हमें जो नॉलेज मिलता है, राइट, उसमें काफ़ी सारे इवेंट्स हो चुके हैं, उस इवेंट्स का रिएक्शन क्या था, उसका आउटकम क्या था, उसकी वजह से क्या हुआ, ये सब जान के हम आज के ज़माने में, आज के कॉन्टेम्पररी इश्यूज, कॉन्टेम्पररी यानी करंट टाइम में, जो करंट टाइम में हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज है उसका सोल्यूशन वहां से ढूंढ सकते हैं. कैसा? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल सो इट्स इजी टू रिमेम्बर. इन द पास्ट हम लोग लास्ट चैप्टर में कास्ट सिस्टम के बारे में काफ़ी पढ़े थे, राइट? जो कास्ट सिस्टम था उसकी वजह से क्या हो रहा था, सोसाइटी में डिविजन हो गए थे, सो देयर वाज अ स्ट्रगल विच वॉज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, राइट? सो वो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ से हमें समझ में आता है कि आज हमारी सोसाइटी में अगर डिविजन की प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट कास्ट रिलेटेड, कोई भी डिविजन है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. सो हमें कोई भी डिविजन क्रिएट नहीं करना है, राइट? सो फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कॉन्टेम्पररी सोशल इश्यूज, जो करंट टाइम में हमारी सोशल इश्यूज जो है उसका सॉल्यूशन हमें वहां से मिलता है, एंड वी कैन इंक्लूड देम इन दी सोशल प्लानिंग. या ठीक है? और क्या हो सकता है? Many projects and programs related to applied history are run. आज के ज़माने में पास्ट के जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी जो चीज़ें थी उसके प्रोजेक्ट्स अभी रन करने में आते हैं. So how does that help? They not only create opportunities for experts but also for normal people like you and me to participate. जब ये प्रोजेक्ट्स रन करने में आते हैं तो प्रोजेक्ट्स ऐसे ही रन नहीं हो जाते, उसके लिए तो सबसे पहले आपको एक्सपर्ट्स चाहिए. और हम इन एक्सपर्ट्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट? हु आर दिस एक्सपर्ट्स? They have the knowledge, they have the language skills, they have various skills that helps to authenticate the documents, it helps to authenticate the monuments. ये जो भी है उनके पास काफ़ी नॉलेज है, they are the experts, okay? उन्होंने वो फील्ड में काफ़ी स्टडी की है. So experts के लिए job opportunities है, right? So there are economic benefits that we have because of the applied history. And also it creates opportunities for people like us. तुम, मैं, बाकी सब लोग जो experts नहीं है वो भी participate कर सकते हैं. For instance, as a tourist, right? हम जो historical monuments देखने जाते हैं, caves देखने जाते हैं, forts देखने जाते हैं, buildings देखने जाते हैं. So
we also participate but not as experts but as tourists. और जब हम उसमें participate करते हैं हमें और भी knowledge मिलता है, right? So as tourists we visit many historical sites or museums and our knowledge and interest in history is promoted, right? जब हम कोई भी historical monuments के बारे में पढ़ते हैं वर्सेस उसको जाके देखते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ताजमहल पे एक बड़ा चैप्टर हो ताजमहल ये है ताजमहल में वो है यू वोंट फाइंड इट दैट इंटरेस्टिंग मे बी ओके बट जब आप ताजमहल को जाके देखोगे तो ये सारी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आएंगे याद भी रहेंगे और आपको और भी इंटरेस्ट उसके अंदर आएगा बिकॉज यू आर सीइंग दैट प्लेस यू आर फीलिंग दैट प्लेस ओके आप उसको बारीकी से देख रहे हो यू आर प्रेजेंट इन दैट प्लेस सो एज टूरिस्ट we visit many historical sites or museums and our knowledge and interest in history is promoted. Okay? Also, we can volunteer to participate in the conservation and preservation of various projects that are run in our city, in our village, in our district, in our vicinity, right? So बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का रिस्टोरेशन हो रहा है उनका प्रेजर्वेशन हो रहा है तो सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है नॉट नेसेसरीली एज एन एक्सपर्ट बट बहुत सारी दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो ओके देयर बाय आप ये रेनोवेशन में प्रेजर्वेशन में आप कंट्रीब्यूट भी करते हो और आपका नॉलेज भी बढ़ता है. यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप ये सारी प्लेसेस विजिट करते हो चाहे वो फोर्ट्स हो या बिल्डिंग्स हो या केव्स हो या जो भी है ये हमारी जो मॉन्यूमेंट्स है ये जो हमारी बिल्डिंग्स है ये सारा हमारा इतिहास जो है हमारा हिस्ट्री है वी हैव टू टेक प्राइड इन देम और ये सारी चीज़ों पे जब जाते हो प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट राइट एनीथिंग ओवर देयर ऐसा करके हम वो प्लेस की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों को भी वो अच्छा नहीं लगता है और जब टूरिस्ट आते हैं बाहर से स्पेशली फॉरेनर्स दे सी दिस थिंग्स राइट so we are giving a very bad impression to them so visit these places enjoy these places but avoid spoiling them avoid writing anything over there take care of these places as if you would take care of your house okay last point here applied history is also known as public history it's for everybody right so it is also known as public history. Hey, I was so excited to talk about applied history that I forgot to welcome you and give basic introduction to the chapter. I'm sorry. कोई गल नहीं, अब कर लेते हैं, right? So welcome to this third chapter titled Applied History from your favorite history book, and it is Happy History. As you can see, this chapter has only 5 subsections. What is applied history? Applied history and research in various fields. Applied history and our present. Management of cultural and natural heritage. Affiliated professional fields. Only 5 subsections. So the first section is what is applied history, and we have already done that. What is applied history हमारा हो चुका है, so we are only left with 4 more sections. So we move to the second section, applied history and research in various fields. Are you ready? Yes, let's go. Do you think there could be any connection between history and various other fields like science, philosophy, politics, mathematics, etc.? क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस फिलोसफी मैथ्स एटसेट्रा एटसेट्रा इनके अंदर कोई कनेक्शन हो सकता है लाइक हिस्ट्री एंड द सब्जेक्ट्स डू यू थिंक दे आर कनेक्टेड लाइक history and philosophy connected history and science connected history and mathematics connected and likewise क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है Hmm? Yes, you're thinking maybe. Well, there is, okay? Every field, yes, every field has history. Whatever field it is, be it mathematics, philosophy, science, कोई भी field आप बोलो, हर एक field में history है. Every field has history.
Each and every field has its own history of building knowledge. Okay? So let us understand how it works, how this history connected with every subject works. Okay? So, what has happened so far? यानी अभी तक क्या हुआ है, some knowledge is available, right? So what has happened so far, or based on the available knowledge, a sense of direction of future development is provided. अभी तक कोई भी फील्ड में क्या हुआ है, अभी क्या नॉलेज है हमारे पास, उसके बेसिस पे आगे हमको क्या करना है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, राइट? सो आज जैसे कि एक ज़माना था जब नंबर्स थे, तो नंबर्स हमें मालूम है तो हम वो नंबर से आगे क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अभी वो हमें मालूम है, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं. वैसे ये फील्ड्स डेवलप होते हैं. तो एक ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे, राइट? वो कंप्यूटर्स बने, बड़े कंप्यूटर्स थे, अभी वो हमें मालूम है, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, उसमें से हमें समझ में आया. वट एवर नॉलेज इज अवेलेबल, जो अभी तक हुआ है उसके बेसिस पे हम आगे क्या करना है वो सोच सकते हैं. इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर future development. So remember that nobody starts from zero each time, right? जब कोई आज का इन्वेंशन होता है कंप्यूटर्स के फील्ड में फॉर एग्जांपल, सो दैट पर्सन डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीट स्क्रैच, एकदम जीरो से शुरुआत नहीं होती, जो अभी अवेलेबल है उस पे से शुरू कंटिन्यूएशन होता है, राइट? सो nobody starts from zero each time. Thus history is important in एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में हिस्ट्री है और हिस्ट्री हर एक फील्ड में इम्पॉर्टेंट है. रिमेंबर, even our present lifestyle is shaped by the historical events, by the chain of historical events. Okay, जो पास्ट में जो भी हो चुका है, आज हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम जैसा जी रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल और आपके पेरेंट्स की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होगा, राइट? अभी उनकी भी चेंज हो रही है, उनका बचपन आपका बचपन बहुत डिफरेंट है. सो इवन आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल, हम जिस तरह से जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, इज शेप्ड बाय द chain of historical events. So let's see the role of history in various fields. Now हमने बोला कि history is present in all the fields, right? So let's see how history is present in some of these fields. First, let's see history in philosophy. For instance, India is a democratic republic. हम बोलते हैं, right? India is a democratic republic country. But क्या हमेशा से India democratic republic country था? नहीं, it was not the case always, right? It's a recent, like few decades ago, ये phenomena, ये ideology develop हुई थी. Forever that was not the case, right? So what is the origin of this ideology? ये जो ideology है कि India is a democratic republic country, उसकी origin कहाँ से हुई? How did it develop historically? And what intellectual traditions were involved in making this ideology? ये जो आइडियोलॉजी है वो हिस्टोरिकली कैसा डेवलप हुई, क्या हुआ था जिसकी वजह से ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई. ओके, एंड व्हाट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, इसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, राइट? इंटेलेक्ट की बात हो रही है, दिमाग की बात हो रही है, जो थॉट प्रोसेस है, सोच क्या थी उसके पीछे, वो हम यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम समझ रहे. सो हाउ डिड इट डेवलप हिस्टोरिकली, कैसा ये हिस्ट्री में डेवलप हुआ, एंड व्हाट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस वर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ दिस आइडियोलॉजी. इस आइडियोलॉजी को बनाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्या विचारधाराएं थी, वो हम यहाँ पे फिलोसॉफी में समझते हैं, राइट? सो व्हाट आर वी डूइंग? We are getting into the history. So to know this, one needs to know the history of philosophy, right? तो history आ गया यहाँ पे. Thus, the history of philosophy helps in understanding the origin of various ideologies. ये जो बहुत सारी है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, राइट? कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री. ऐसे बहुत सारी आइडियोलॉजीज है दुनिया में. तो ये सारी आइडियोलॉजीज कहाँ से आई, उनका ओरिजिन क्या है, वो समझने में हमें हेल्प करता है. व्हाट हेल्प्स? द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, जो थॉट प्रोसेस है, जो उसके अंदर हमारी विचारधाराएं है, वो क्या है, right? So the intellectual traditions giving rise to those ideologies and their historical
डेवलपमेंट, वो कैसा हिस्टोरिकली डेवलप हुई, राइट। सो बहुत सारे जो आइडियोलॉजीज होते हैं सब वन गो में नहीं बन जाते, वो कुछ होता है फिर उसमें इवोल्यूशन होता है, उसमें चेंजेस आता है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बोल रहे हैं हम लोग। सो ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कहाँ से शुरुआत हुई, ओरिजिन, उसके अंदर क्या थॉट प्रोसेस गया, और वो हिस्टोरिकली कैसा डेवलप हुई है, राइट। ओरिजिन अभी नहीं हुआ, पास्ट में हुआ, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हो। ओरिजिन, थॉट प्रोसेस क्या था, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, और ओरिजिन के बाद उसका प्रोसेस क्या था, कैसे डेवलप हुआ है, वी टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, सो हिस्टोरिकल development. So history of philosophy helps us in understanding the origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to those ideologies, and their historical development. Okay? And of course, it needs a language as a medium of expression. Language की ज़रूरत है, right? Language नहीं है तो हम कैसे समझते उसको? So language is essential as a medium of expression. It means what? It means that one also requires knowledge of the history of language to understand the philosophical expression. तो यानी जो philosophical चीज़ें हम यहाँ पे बोल रहे हैं, history of philosophy helps us to understand various ideologies, right? तो वो समझने के लिए हमें एक language भी चाहिए. So language की जो history है, क्योंकि language also keeps evolving, right? आज हम जिस तरह से बोलते हैं, there are many new words that we didn't use before. So it happens, it just comes, right, with the time, with experience. हम कहीं पे कुछ सुनते हैं, फिर we start using, and then everybody starts using. For example, Google. आज Google, the way we are using, it's like verb, right? Google कर लेना, right? So this is how the language develops, right? So history of language is also important to understand this philosophical expression. Was it easy? Yes, it is, right? So now we move on to the next subject. And the next subject is science. What does science have? Science के अंदर क्या होता है? हम क्या पढ़ते हैं science के अंदर? We study about discoveries, inventions and theories, right? कैसे क्या discovery हुई थी, क्या inventions हुए थे, क्या theories थी, right? So science is about discoveries, inventions and theories. Thus, the history of science helps in understanding the chronological order, cause and effect chain, and factors of this scientific discoveries, inventions and theories. Okay? तो हम जब ये साइंस में जो भी चीज़ें होती है उसकी जो हिस्ट्री है, साइंस की जो हिस्ट्री है, it helps us understand the chronological order. Same हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, right? Why historical research? To get the chronological order, right? तो साइंस में भी chronology है, right? पहले बड़े कंप्यूटर्स बने, उसके बाद छोटे आए, उसके बाद छोटे आए, and today we have like the laptops, right? Even the notebooks we have, so they're getting smaller and smaller and more efficient. तो जो chronological order है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, so that is the history of science. Then also history of science helps us understand the cause and effect. क्या हुआ जिसकी वजह से ये हुआ. So cause and effect relationship. All this we have studied already in chapter 1, but in relation to history. Same चीज़ है यहाँ पे, okay? History का जो था वही है, खाली हम यहाँ पे बोल रहे हैं history of science helps us, right? वो history ही था, but यहाँ पे हम history of science is a particular बोल रहे हैं. So बाकी कुछ ऐसा खास फर्क नहीं है, तो आप first chapter से भी यहाँ पे लिख सकते हो, right? So chronological order, cause and effect, और ये factors. क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुई, थियरीज आई, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन ने देखा बल गिरा, वो सीधा नीचे गिरा, यहाँ वहाँ क्यों नहीं गिरा? सो दैट लेड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सो हाउ दिस डिफरेंट इवेंट्स जो है, जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से सारे जो डिस्कवरीज हुई या इन्वेंशंस हुई या ये थियरीज बाहर आई. ओके, so this is the history of science, helps us understand the chronological order, cause and effect chain, and factors of scientific discoveries, inventions and theories. Okay, so now human efforts to fulfill a need and also the curiosity makes all these inventions, discoveries and theories possible, right? ये कैसे होता है? जो इंसान जो है उसके जो efforts है
टू फुलफिल अ नीड, उनकी कोई नीड है उसको फुलफिल करना। जैसे कि अभी हमारे पास पहले बड़े कंप्यूटर्स थे, अभी नीड क्या थे कि हमारे छोटे कंप्यूटर्स होने चाहिए ताकि हम कम जगह लें, और छोटे होने चाहिए ताकि वो और कम जगह ले और एफिशिएंट, और अभी हम वो कंप्यूटर्स हमारे साथ कैरी कर सकने चाहिए। सो लैपटॉप, सो नीड, राइट? सो ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड, हम जो एफर्ट्स करते हैं हमारी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने में, हमारी नीड्स की, हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं वो। और क्यूरियोसिटी, ऑलवेज बी क्यूरियस इन लाइफ, क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब बच्चे होते हैं ना बहुत क्यूरियस होते हैं, हर एक चीज़ में जानने की कोशिश करते हैं, बट एज वी ग्रो आवर क्यूरियोसिटी reduces फॉर सम रीज़न। बट बी ऑलवेज क्यूरियस, लाइफ में हमेशा क्यूरियोसिटी बनाए रखना। जो लोग क्यूरियस रहते हैं वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। सो हमेशा क्यूरियस रहना, ओके, टू नो मोर एंड मोर हाउ थिंग्स वर्क, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। try, and because that will help you gain more knowledge, और जब आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, राइट? सो ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो द क्यूरियोसिटी, राइट? ये क्यूरियोसिटी नहीं होती, ये इन्वेंशन से डिस्कवरीज नहीं होती, तो क्यूरियोसिटी के साथ साथ एफर्ट्स लगाना भी ज़रूरी है। एफर्ट्स लगाने को हम तैयार है बट क्यूरियस नहीं है तो नहीं चलेगा, क्यूरियस है बट एफर्ट्स नहीं लगा रहे तो नहीं चलेगा। क्यूरियस है, हमने बहुत सारा नॉलेज एक्वायर कर लिया बट उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा, राइट? तो एफर्ट्स करने को हम तैयार है, मेहनत करेंगे, बट हमको कुछ जानना नहीं तो मेहनत कहाँ करोगे, राइट? सो जनरली आपकी लाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ, एफर्ट्स एंड क्यूरियोसिटी गो हैंड इन हैंड, ओके? सो ऑलवेज बी रेडी टू पुट इन एफर्ट्स, मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहना, एंड ऑलवेज बी क्यूरियस, ओके? So these efforts are based on already available scientific knowledge, right? तो जो knowledge हम ये जो efforts है कहाँ लगा रहे हैं, तो ऑलरेडी एफर्ट्स जो है ऐसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। एज वी सेड बिफोर, कोई भी चीज़ हम स्क्रैच से नहीं करते, ज़ीरो से नहीं करते हैं। तो जो ऑलरेडी साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, जो साइंटिफिक नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उस पर हम और एफर्ट्स लगा के और फिर नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस और थियोरीज हम बनाते जाते हैं, ओके? सो दिस वाज साइंस एंड हिस्ट्री। व्हेन आई से टेक्नोलॉजी, जब मैं बोलती टेक्नोलॉजी तो आपके दिमाग में क्या आता है? यूजुअली कंप्यूटर्स, इंटरनेट, वाईफाई, टेलीफोन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट? सो रिमेंबर, technology is not only that, technology is much beyond that, okay? So technology सिर्फ computers, internet यही नहीं है, technology is also about agricultural production, it is about commodity production, it is about architecture, it is about engineering and many more things. So technology is much beyond computers, okay? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, कमोडिटी प्रोडक्शन है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, ये सारा टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। Thus, the history of technology helps in understanding the changes and their causes in various fields as mentioned before. Okay? तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके कॉजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से पता चलती है? हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? हर एक चीज़ सब्जेक्ट का हिस्ट्री हमने देख लिया है, राइट? सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी हिस्ट्री है जो हमें समझने में हेल्प करता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर और उसके कॉजेस क्या है, किस वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, ओके? So do you think there is any relation between science and technology? आपको क्या लगता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? Is there a relationship between science and technology? Well, sounds like a silly question, right? Well, true. Scientific discoveries and inventions and technological advancement are mutually dependent on each other. ओके, साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हम बोलते हैं वो, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, म्यूचुअली, राइट? दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से साइंटिफिक डेवलपमेंट्स भी होते हैं, राइट? सो दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, एक दूसरे पे वो
डिपेंड करते हैं. Okay, so both knowledge are important right from the beginning. Meaning शुरुआत से बात करते हैं, अगर जो स्टोन टूल्स थे, राइट, पत्थर से क्या होता था, उन लोग आग जनरेट करते थे, प्रोटेक्शन में यूज करते थे, वहां से लेके आज तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स बोलो या टेक्नोलॉजी में, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन बिटवीन साइंस एंड द technology. Okay, so thus the history of technology helps us to know this mutual dependency. टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स है उसकी वजह से हमें ये दोनों के बीच में, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिपेंडेंसी है, जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी हम बोल रहे हैं, वो किस तरह से है वो समझने में, और द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म को समझने में भी हेल्प करता है. ओके, सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से we understand two things. It helps us to know the mutual dependency and also the development of mechanism. वो mechanism का किस तरह से development हुआ, right? और ये दोनों के बीच में क्या dependency है. So this is how history is present even in technology. Okay, so let's move on to the next subject. Here we are with the next subject, industry and commerce. Industry and commerce. So what happens with the growth of industry and trade? जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, ट्रेड बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है? ऑफ कोर्स पैसे आते हैं, वो एक चीज़ है, राइट, पर उसके अलावा क्या होता है? The mutual social transactions also expands, and it also promotes continuous development of the network of cultural interactions. Okay, जब इंडस्ट्री और कॉमर्स बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, तो सोशल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं. जो सोसाइटी है वो एक दूसरे की देखती है, उसमें से एक दूसरे से सीखते हैं. वो जो सोशल ट्रांजैक्शन है, यानी एक सोसाइटी का इन्फ्लुएंस दूसरी सोसाइटी पे होना, वो भी वहाँ पे होता है, राइट. पीपल आर मीटिंग, दे आर टॉकिंग, दे आर डिस्कसिंग, सो एक दूसरे के थॉट्स शेयरिंग होती है, राइट. सो सोशल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं और कल्चरल इंटरेक्शंस भी होते हैं, राइट. हम जब दूसरे कल्चर में जाते हैं तो वहाँ का जो कल्चर है उसमें से कुछ देख के आते हैं, वहाँ से कुछ एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, राइट. जब हम देखते हैं कि कोई बाहर जाके आता है थोड़े साल के बाद, अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी रह के आता है, वो इंसान थोड़ा बदल के आता है, क्योंकि उसने वहाँ का कल्चर में रहा है, वहाँ के कल्चर को थोड़ा अडॉप्ट किया है, राइट. सो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जब बिजनेस बढ़ता है तो वो ट्रांजैक्शंस भी बढ़ते हैं. ओके, सो व्हाट ट्रांजैक्शंस आर वी टॉकिंग? सोशल ट्रांजैक्शंस एंड कल्चरल इंटरेक्शंस. ओके, बिजनेस है तो ऑफ कोर्स पैसा तो है, बट यहाँ पे हम इसका इम्पैक्ट क्या है, हिस्ट्री के रिलेटेड हमें पढ़ना है, राइट. सो वी से दैट व्हेन इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स एक्सपांड्स, जब आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है, आपका बिजनेस बढ़ता है, तो सोशल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं और कल्चरल इंटरेक्शंस भी होते हैं. We know that market and commerce never remains the same, right? Market जो है, business जो है, वो हमेशा सेम नहीं रहता है, right? It keeps changing continuously. उसमें कोई ना कोई बदलाव आते रहते हैं because of many reasons, right? Therefore, human relationships and social organizations change too, राइट. अगर बिजनेस में चेंजेस आ रहा है, एंड दैट इज बाउंड टू हैपन, हमेशा सेम बिजनेस सेम तरीके से नहीं चलता है, उसमें चेंजेस आते हैं, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है, और ह्यूमन की जब हम बात करते हैं, सो वी आर सोशल एनिमल, राइट. सो ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड social organizations also change. Okay, so thus to understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organization and economic institutions. ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको समझने के लिए क्या चेंजेस है आज इंडिया जिस तरह से है, हाउ वाज इंडिया 10 years ago, हाउ वाज इंडिया 20 years ago, हाउ इज इट नाउ, ये सारा समझने के लिए you need to understand the history of culture, right, history of social organization and also the economic institutions. आज हमको अगर इंडिया को समझना है, इंडिया was very different few years ago. So this changes that we have, how it has evolved, how it has happened, क्यों आए, कहाँ से आए, ये सारा समझने के लिए you need to study the
history of culture, history of social organizations, and economic institutions, right? So anything that you want to understand in present, कोई भी फील्ड में आप कुछ भी आज की तारीख में जो हो रहा है उसे समझना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री में जाना ही पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन, राइट? हिस्ट्री सम देखोगे तो आपको समझ में आएगी कहाँ से ये सारे बदलाव आ रहे हैं. हमने बोला आइडियोलॉजीज, राइट? सो ये बदलाव कहाँ से आ रहे हैं, चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं. सो हिस्ट्री इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड इट. तो चाहे हमें हिस्ट्री अच्छी लगे या ना लगे, हिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा. और कोई भी फील्ड में हिस्ट्री है. आप जब 10th के बाद साइंस लोगे तो साइंस में भी हिस्ट्री होएगी, कॉमर्स में भी हिस्ट्री होएगी, आर्ट्स में भी हिस्ट्री होएगी. सो हिस्ट्री इज एवरीवेयर. आपकी खुद की अपनी हिस्ट्री है. So we cannot run away from history. So let's love history and be happy with history. Happy history. Let's do some management studies. What it takes to produce a product. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? कोई प्रोडक्ट कैसे बनता है? Well, can you think of the factors? Various factors are needed, right? Like means of production, people, market, sales, etc. All these factors are important, right? अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो बनाने का जरिया हमारे पास होना चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? जो मशीनरी चाहिए, जो टूल्स चाहिए वो होने चाहिए, लोग चाहिए, वो सब चलाएगा कौन, मशीन्स है, टूल्स है, वो सब यूज कैसे होएगा. ओके, सो वी नीड पीपल, वी नीड मार्केट. प्रोडक्ट बन गया, बन क्या, कहाँ रखोगे उसको, मार्केट में रखना पड़ेगा, राइट? एंड सेल्स, वो प्रोडक्ट बिकना चाहिए, राइट? सो वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ थोड़े लिस्ट डाउन करे हैं. ओके, सो वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, राइट? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपल, market, sales, etc. are involved in the chain of production. It's a common sense, yeah? Thus, knowledge of all these factors from the similar functional system of the past is useful and essential. यानी कोई भी सेम सिस्टम पास्ट में फंक्शन कर रही थी, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा था, वो उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, उनके लोग कैसा काम करते थे, उनका मार्केट क्या था, सेल्स कैसा हुआ था, सारी चीज़ें जब आप समझते हो फ्रॉम द पास्ट सिस्टम, इट हेल्प्स यू टू वर्क इन द प्रेजेंट सिस्टम, राइट? आज जो आपकी प्रेजेंट सिस्टम है उसमें आपको पास्ट का नॉलेज काफ़ी यूजफुल होता है, राइट? अगर आपकी कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, या कोई आपकी फैमिली में है जिसने एमबीए किया रहेगा, तो आप उनको पूछ सकते हो कि जब वो कोर्स करते हैं तब उनको बहुत सारी केस स्टडीज होती है, जो रियल केस स्टडीज होती है, ये कंपनी में इन सो ईयर ये हुआ था, तो उसकी वजह से ये हुआ, तो आज ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम उससे हम सोल्यूशन ले सकते हैं, राइट? सो नॉलेज ऑफ द सेम फंक्शनल सिस्टम इन द पास्ट. ओके, knowledge of all the factors from the same similar functional system of the past is useful and essential. वहाँ से हमको समझ में आता है कि आज हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए. जैसे कि वो ज़माने में उनको फैक्ट्री में कोई इश्यू हो गए थे, स्ट्राइक हो गई थी, तो किस तरह से उन्होंने वो स्ट्राइक के साथ डील किया. तो वहाँ से आज हम समझ सकते हैं क्या हम उस तरह से स्ट्राइक के साथ डील कर सकते हैं, या कोई और तरीका होना चाहिए. वो स्ट्राइक जिस तरह से वो डील करे उसका उनको सक्सेसफुल थे या फेलियर मिला. तो अगर वो फेल हुए तो आज वो चीज़ हम ट्राई नहीं करेंगे, हम कुछ और ट्राई करेंगे, राइट? सो दैट नॉलेज, सेम सिस्टम का जो नॉलेज है वो हमें आज भी हेल्पफुल होता है. अगेन वी टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, राइट? Well, we know humans are funny and weird, right? So it is better to understand them, their psychology for healthy management. हम इंसान काफ़ी फनी है, बहुत वियर्ड है, कभी भी हमारा मूड कुछ भी चेंज हो जाता है, राइट? तो इंसान जो ह्यूमन मैनेजमेंट है वो करने के लिए, बेटर ह्यूमन मैनेजमेंट के लिए हमें इंसान की साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है, राइट? हाउ वी थिंक. जैसे आप जो कंपनीज में काम करते, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ डील करने के लिए उनके एम्प्लॉयज़ किस तरह से सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वो समझना ज़रूरी है. साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, okay, because ह्यूमन बींग्स आर नॉट सो ईजी टू डील विद. हाँ, सो
Understanding their psychology is very important for healthy management of people. It in turn requires understanding of the social and economic institutions. Okay, इंसान की साइकोलॉजी समझने के लिए जो सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, यानी किस सोसाइटी में हो रहे क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, ऑल दिस फैक्टर्स एज एन इम्पॉर्टेंट रोल. हम कहाँ रह रहे हैं, हम कैसे हालात में हैं, हमारी क्या सोसाइटी है, दैट इम्पैक्ट्स अवर साइकोलॉजी. सो साइकोलॉजी समझने के लिए जो सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है उसको समझना ज़रूरी है. And what are the social and economic institutions? What do? They support the industrial and commercial institutions, right? As we have seen, अभी हम लोग ने past में जब industry and commerce की बात कर रहे थे वहाँ पे हमने देखा कि how it impacts social and cultural life, right? So psychology of the people, वो psychology समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? उनकी social and economic institutions, वो जो industrial and commercial growth में help करता है. Okay, this historical knowledge makes management easier at various levels. So यहाँ पे historical knowledge, past का ये जो knowledge है वो समझ के हम current systems जो है, चाहे वो इंसान को manage करना होवे या production को manage करना होवे, जो भी अलग अलग elements है उसका corresponding history जान के हम आज के ज़माने में भी वो systems को manage कर सकते हैं. Here we are with the next subject, arts. Every artist and art has a style of expression, right? हर एक artist का और हर एक art का अपना एक style रहता है, right? ये तो हम सबको मालूम है. It's quite simple. It's logical, right? So this style of expression, वो जो expression का जो style है, किस तरह से उसको express करते हैं, उसको बयां करते हैं, right? So style of expression and their foundation. और वो जो फाउंडेशन कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आया है, राइट? एंड द फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. कोई भी आर्ट है, इट इज बेस्ड इन समथिंग, राइट? इंटेलेक्चुअल, थॉट प्रोसेस, इमोशनल. आर्ट विदाउट इमोशन इज एम्प्टी. ओके, वाह, आर्ट विदाउट इमोशन इज एम्प्टी. सो इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड कल्चरल, राइट? हर एक कल्चर का अपना एक आर्ट फॉर्म रहता है. ओके, सो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरह से उसको एक्सप्रेस किया गया है, एंड देयर फाउंडेशन किसके अंदर है, इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, cultural traditions. So these two aspects helps us to understand the development of various art forms. जो बहुत सारे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है, हमको मालूम है, राइट? फॉर एग्जांपल डांस में आप देख लो कितने सारे डांस के फॉर्म्स है, राइट? अगर हम ड्राइंग की बात करते हैं उसमें भी बहुत सारे फॉर्म्स है. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द आर्ट्स जो है, उसके अंदर कोई भी आर्ट में इतने सारे जो अलग अलग फॉर्म्स है, वो कहाँ से डेवलप हुए, किस तरह से ये डांस में ऐसा होता है, भरतनाट्यम में ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, राइट? सो वेयर आर दिस थिंग्स कमिंग फ्रॉम? तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ है, जो अलग अलग आर्ट्स के जो तरीके हैं, जो फॉर्म्स है, वो कैसे बने, कहाँ से समझ में आता है? स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन से, एंड द फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, राइट? ओके, जैसे मैंने अभी बोला, इमोशंस के बगैर आर्ट एम्प्टी है, राइट? सो इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट है उसका इमोशनल स्टेट क्या है, ओके, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट एंड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट. ओके, जो आर्टिस्ट है उसका जो इमोशनल स्टेट है वो, और कोई भी पर्टिकुलर आर्ट में वो जो भी आर्ट कर रहे हो तो रिस्पेक्टिव आर्ट, राइट? जो आर्टिस्ट है वो जो आर्ट में है, वो इसके लिए हम यहाँ पर रिस्पेक्टिव आर्ट बोल रहे हैं. तो वो आर्ट का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, तो वो आर्टिस्ट का इमोशनल टेम्परामेंट एंड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट form are the keys to the expressions in any form, and this can be understood with the help of cultural history. Clear है?
ठीक है। तो आर्टिस्ट का इमोशनल जो स्टेट है वो, और डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट, ये जो दो चीजें हैं आर द कीज टू द एक्सप्रेशंस इन एनी आर्ट। जो एक्सप्रेशन है, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कहाँ से आता है? जो डेवलपमेंट हुआ वो आर्ट में, पर्टिकुलर आर्ट, जिस आर्टिस्ट की हम बात करते हैं, वो जो आर्ट कर रहा है वो, और उसका इमोशनल टेम्परामेंट है वो डिफाइन करता है कि वो एक्सप्रेशंस किस तरह से होगा, राइट? सो आर द कीज टू द एक्सप्रेशंस इन एनी फॉर्म। एंड ये समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? कल्चरल हिस्ट्री। Okay, so I will just repeat this once, and if you want you can repeat with me. Emotional temperament of the artist and the developmental history of the respective art form are the keys to the expressions in any art form, and this can be understood with the help of cultural history. Okay, emotions समझो and art filled keeps developing. Final on the list is humanities. It is very, very vast as it includes history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economics, etc. etc. बस करो यार, बच्चे की जान लोगे क्या? इतना सारा है ह्यूमैनिटीज के अंदर। हिस्ट्री पे है, आर्कियोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। अरे मेरी भी सांस फूल गई, इतने सारे नाम लिखे। वेल, ऑल दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज। ओके, सो कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा? आई मीन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज डिसिप्लिन्स की अंडरस्टैंडिंग भी नेसेसरी है। सो ऑल दिस डिसिप्लिन्स दैट वी सेड, ये सब लाइक हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, आर्कियोलॉजी है, जो भी है, ये सारे जो फील्ड्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो आगे कैसे बढ़ा। सो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस डिसिप्लिन्स इज अंडरस्टैंडिंग, आई मीन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस डिसिप्लिन्स की अंडरस्टैंडिंग भी necessary है। Okay, all these disciplines are supposed to have their origin in philosophy. ये सारी disciplines जो है उनका origin कहाँ पे है? philosophy में। Okay, so let's understand bit better. Ancient people, जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, all over the world, okay, we are not just talking about India, we are talking generally all over the world, पूरी दुनिया के लोगों की हम बात कर रहे हैं। So what did they try? They tried to speculate. उन्होंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, उन्होंने समझने की कोशिश की। They tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. उन्होंने क्या अंदाज़ा किया, उन लोग क्या समझना चाहते थे कि जो यूनिवर्स है, जो दुनिया है, वो दुनिया और हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर क्या रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हम हैं इस दुनिया में और ये दुनिया है, तो हम और दुनिया के बीच में, इंसान और दुनिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो समझने के लिए उन्होंने स्पेकुलेशन शुरू किया। ओके, दे हैव नो थियरी टू बेस ऑन, दे आर जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। उन लोग अंदाजा लगा रहे हैं। ओके, उन लोग अपनी सोच लगा रहे हैं। देयर इज नो एविडेंस, नो थियरी, दे आर जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से बहुत सारी mythological stories डेवलप हुई। This speculation led to the development of various mythological stories about the origin of this world. दुनिया इस तरह से शुरू रहेंगी, the universe में ये है, human life ये है, God ये है, ये rituals है, right? So it gave rise to many mythological stories. The speculation by the ancient people, जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, जब उन्होंने अंदाज़ा लगाने चाहा, जब उन्होंने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि इंसान और इस दुनिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, so they started speculating, right? No basis for any of the theories, they're just speculating, जिसकी वजह से आज क्या है हमारे पास? बहुत बहुत सारे mythological stories है, right?
कोई बोलता है दुनिया इस तरह से शुरू हुई, कोई बोलता है दुनिया उस तरह से शुरू हुई. सो दुनिया कैसे शुरू हुई, गॉड क्या है, ह्यूमन लाइफ क्या है. So we have many stories around that. Also, the roots of the philosophical ponderings are to be found in this mythological stories. ये जो stories है उसके अंदर फिर those stories give rise to many thinking, right? Okay, अभी लोगों ने speculate किया, but now people also wants to develop some philosophy around it. तो आज जो काफ़ी philosophical ponderings है, जो philosophical ideologies है, उसका root कहाँ पे है? So they are into this mythological stories. Okay, आज for example एक फिलोसफी बोलता है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. सो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? समवेयर फ्रॉम दिस मिथोलॉजिकल स्टोरीज. या जो लोग कुछ मानते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, सो ये जो फिलोसफी है उसका ओरिजिन कहाँ से आया? सो सम ऑफ दिस फिलोसफीज, आई एम नॉट सेइंग ऑल, ओके, मेनी ऑफ दिस फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स का जो रूट है, इट कम्स फ्रॉम दिस मिथोलॉजिकल स्टोरीज. ऑल्सो ये जो अलग अलग डिसिप्लिन्स हमने बोला ह्यूमैनिटीज़ के अंदर है, राइट, जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो भी है, ये अलग अलग जो डिसिप्लिन्स है, दे हैव द थियोरेटिकल फाउंडेशंस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकल फाउंडेशंस, ओके. सो दे हैव द थियोरेटिकल फाउंडेशंस based on this philosophical theories. Okay, so do you see how all these things are connected, right? So ancient people speculated, which gave rise to mythological stories, और mythological stories में से philosophical ponderings आई, and वहाँ से theoretical foundations भी आए. Okay, so all these things are in that way connected. So only historical knowledge can help us in understanding this developmental stages. तो कहाँ से क्या हुआ, कौन सा पहले स्पेकुलेशन हुआ, उसके बाद उसमें से क्या मिथोलॉजिकल स्टोरी आई, उसमें से क्या फिलोसॉफिकल पॉन्डिंग्स हुई, वहाँ से क्या थियोरेटिकल फाउंडेशन मिला, राइट. सो ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज जो है, इसकी हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तब आपको ये सारा कनेक्शन, एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है, एक दूसरे ने हाउ इट गिव राइज टू अनदर थिंग, चेन ऑफ इवेंट्स जो है यहाँ पे, वो हम समझ सकते हैं. ओके. Woohoo! We are done with the second section also. That was quite a long section and we are done with it. Yes. So 2 sections हमने उड़ा दिए, अभी बच गए खाली 3 sections. And here we go and attack the 3rd section. Do remember to subscribe so that you get notification when you upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well so that your friends also can know about it. The 3rd section is titled Applied History and Our Present. Ready for it? Yes, let's go. Who are you? I mean, what is your identity? Where does your identity come from? What's going on? Whether we like it or not, history is always and will always be present with us all the time, right? आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो कहाँ से आती है? हिस्ट्री में से आती है, राइट? आप कौन है, कहाँ से मालूम पड़ रहा है? आपकी भी अपनी हिस्ट्री है. सो हमें पसंद हो या ना हो, जिंदगी की हकीकत है जिसे हम ठुकरा नहीं सकते हैं, और वो हकीकत है कि हिस्ट्री हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी. ओके, वो पास्ट है बट हमेशा हमारे प्रेजेंट में हमारे साथ में रहेंगे और फ्यूचर में रहेंगी. वाह, इंटरेस्टिंग ना. वो हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट बट वो हमारे साथ अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगी. ओके, कूल. ये जो फैक्ट है आपके बुक में इस तरह से दिया है, द विजिबल एंड इनविजिबल, the visible and invisible relics of the past exist in the present. Relics means something from the past, okay? So let's repeat. The visible and invisible relics of the past exist in the present. We are curious, attracted, and also wish to know more about history. Why? Because it connects us to our ancestors, to their creative thoughts and traditions, right? हम हिस्ट्री जानने के लिए क्यूरियस होते हैं. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट क्यूरियोसिटी, राइट?
and we are attracted. हम क्यूरियस भी हैं, हम अट्रैक्ट भी होते हैं, एंड हमको वी विश ऑल्सो, हमको वो जानने की एक इच्छा होती है, राइट? सो क्यूरियस, attracted, and we wish to know more about our history. I hope that's true for you too. I am always. Why? Because it helps us to connect to our ancestors. इसकी वजह से हम हमारे ancestors के साथ connect हो पाते हैं. What about the ancestors? वो किस तरह से सोचते थे, उनकी क्या ट्रेडिशंस थी, राइट? So it connects to our ancestors, by which we mean that it connects us to their creative thoughts and their traditions. Thus, history is our heritage, linking us to our traditional, linking us to our tradition. Too emotional, यार रोना आ गया. वेल यहाँ पे वापस अप्लाइड हिस्ट्री की बात हो रही है जो हमने ऑलरेडी बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में कर लिया है. सो लेट्स जस्ट क्विकली रिकैप इट. ओके, सो अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट, राइट? हमारा जो प्रेजेंट है वो हम समझते हैं. हाउ? with the help of history and finding right direction for the benefit of our future, right? ये हमने already आगे कर लिया है, so I'm not going to repeat it, you know it well. Yeah, so as we also saw at the beginning of the chapter, that conservation and preservation of history, as we saw at the beginning of the chapter, that conservation and preservation of our heritage and making it accessible to people is also part of applied history, and it creates employment opportunities, right? ये सारा हमने already first section में पढ़ लिया है. So whatever you have here in front of you at the moment, ये सारी चीजें हमने already कर ली है, and it's just mentioned here again. Well, whoa, 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 we're done with the third section also. Wasn't that quick? Too quick it was. Yeah, so let's move on. Here we are, ready to start the fourth section, management of cultural and natural heritage. First, we shall attack cultural heritage. Cultural heritage, it's a form of human creation, okay? It's a form of human creation. So cultural heritage में दो types है, tangible and non-tangible. अगर आपको tangible और non-tangible में difference पता है तो ये आपको याद रखना बहुत ही easy है. Tangible, जब हम कोई चीज़ को touch कर सकते हैं, right? उसको touch करके उसको feel करते हैं. So that is tangible. And non-tangible is you can't touch it, you can just feel it, you can just see it, you can just understand it, you can experience it, right? So tangible and non-tangible. So under tangible, what do we have? All the things that comes under tangible. Okay, our ancient sites, आप उसको touch कर सकते हो, buildings है, artifacts है, manuscripts है, sculptures है, paintings है, right? So आप उसको touch कर सकते हो, उसको छू सकते हो. So ancient sites, ancient buildings, artifacts, manuscripts, sculptures, paintings. खाली आपको अपना दिमाग लगा के एक लिस्ट बनानी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट है नॉन टेंजिबल. नॉन टेंजिबल एज वी सेड, यू कैन टच देम, राइट? सो इसके अंदर क्या आएगा? सब ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज. ये ओरल ट्रेडिशन है, आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्टोरी पास हुई है, राइट? सो दैट्स ओरल ट्रेडिशन. जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो सोशल कस्टम्स और रिचुअल्स है, राइट? जिस तरह से बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म हम करते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हो रिचुअल्स में, हम परफॉर्म करते हैं, पर उसको टच नहीं करते, राइट? रिचुअल का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है. सो नॉन टेंजिबल डज नॉट हैव फिजिकल फॉर्म. ओके, स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जो आर्ट है, राइट? डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है, जैसे डांस है, जो भी है, सिंगिंग है. सो यू डोंट टच. अब ये मत बोलना कि हम सिंगिंग में पेपर को टच करते हो, पेपर अलग बात है. ओके, आपका दिमाग वहाँ पे जा सकता है, इसके लिए मैंने पहले से ही वार्न कर दिया. Certain traditional skills है, communities, groups represent such traditions, customs and skills. So non-tangible में ये सारी चीजें जिसको आप छू नहीं सकते हो, right? You can't touch. So oral traditions and their language, traditional knowledge, social customs and rituals, styles of performing arts, certain traditional skills, communities, groups represent such traditions, customs, skills. Okay? All this comes under non-tangible part of cultural heritage. So easy and simple, yeah? And it's time to attack natural heritage.
सो नेचुरल हेरिटेज के अंदर क्या है, इट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल, राइट, नेचुरल. ओके, सो दिस वर्ड शुड जस्ट गिव यू हिंट. बायोडाइवर्सिटी जिसके अंदर है फ्लोरा, फोना, इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, फ्लोरा, फोना, इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये जो इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक जो है उसका क्या रोल है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी क्रूशियल टू सस्टेन फ्लोरा एंड fauna, right? Flora, fauna, it depends upon the ecology, environment, geography कैसा है. So we know when we visit some places तो बताते हैं यहाँ पे ये grow होता है because of this geography, because of this ecological reasons and all of that, right? So ecology and geomorphic characteristics are very crucial, very important for sustaining what? Flora and fauna. I mean flora and fauna of a particular region. यूनेस्को, नाम तो सुना ही होगा. Well, UNESCO is a global organization which has announced some directives, right? हमको मालूम है यूनेस्को जो है वो कोई national institution नहीं है, it's a global. Okay, it works for the entire world. It's a global institution which has announced some directives. Okay, पर काई को क्यों announce किया है ये? So these directives were announced with the objective of promoting the cultural and natural heritage. हम यहाँ पे cultural और natural heritage की बात कर रहे थे, right? So ये जो UNESCO है, जो global institution है, उसने बहुत सारे directives announce किए हैं और उसका मकसद क्या है, ताकि cultural और natural heritage को हम promote कर सकें. आपने बहुत बार कई जगहों पे लिखा हुआ देखा होगा कि इट्स अ यूनेस्को साइट. आप कभी किसी के कोई इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आप देखते हो इट्स यूनेस्को साइट, राइट? सो देयर एम, उनका मकसद क्या है कि जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रमोट करना, उसको प्रिजर्व करके रखना और उसको प्रमोट करना. ओके, पण कैसा रे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायरेक्टिव्स, ये जो डायरेक्टिव्स उन्होंने दिए हैं उसके बेसिस पे a list of sites and traditions are declared as world heritage. जैसे अभी मैंने बोला, राइट, कि आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसा पढ़ा रहेगा. सो डायरेक्टिव्स जो बनाए हैं उसके बेसिस पे दे हैव आइडेंटिफाइड साइट्स एंड प्लेसेस, जो ट्रेडिशंस है, और उनको वर्ल्ड हेरिटेज करके डिक्लेयर किया है. ओके, सो देन दो साइट्स आर प्रिजर्व्ड, उनका ध्यान रखने में आता है, उसको मेंटेन करने में आता है. So this is what UNESCO does. Okay, so UNESCO is a global organization which has announced some directives. These directives were announced with the objective of promoting the cultural and natural heritage. On the basis of these directives, list of sites and traditions are declared as World Heritage. Okay, हम नेचुरल कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहे हैं, राइट? ये वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है, सो वर्ल्ड हेरिटेज. सिंपल. बुक के पेज 18 पे बहुत ही लंबा लिस्ट है, राइट? यू हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल एंड इंटेंजिबल, कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज? ये जो इंस्टीट्यूशंस है, जो अलग अलग नाम है, अगर आपको लिस्ट देने में आती है तो आप कैसा बोल सकते हो कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा? कोई आइडिया है? बताऊं? वेल, जब वो ट्रेडिशन के बारे में है, थिएटर है, चैंटिंग है, डांसिंग है, अभी हमने इंटेंजिबल के बारे में पढ़ा, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स, ट्रेडिशन, थिएटर, चैंटिंग, डांसिंग, ये सारा ओरल एंड इंटेंजिबल में जाता है. यू कैन नॉट टच देम. ओके, सो ऑल दैट गोज इन ओरल एंड इंटेंजिबल. फिर कल्चरल हेरिटेज, कल्चर की बात हो रही है, राइट? सो दिस आर टेंजिबल थिंग्स एंड यू कैन टच देम. ओके, सो कल्चर रिलेटेड है, सो बिल्डिंग्स, केव्स, फोर्ट्स, ये सारी चीजें जो है वो कल्चरल हेरिटेज में जाएगी. ओके, एंड नेचुरल, नेचर रिलेटेड, राइट? सो पार्क्स है, वैलीज है, घाट्स है, जैसे वेस्टर्न घाट है, राइट ना, कोई नेशनल पार्क है, सो ये सारी चीजें कहाँ जाएगी?
नेचुरल हेरिटेज में। सिंपल राइट, काफी सिंपल है। ओके, ओरल एंड इंटेंजिबल, इंटेंजिबल याद रखो। ओके, सो जो ओरल एंड इंटेंजिबल के अंदर आपको इंटेंजिबल याद रखना है तो उसके हिसाब से आप उसमें डालोगे। कल्चरल हेरिटेज, कल्चर की बात हो रही है राइट, ये टेंजिबल चीजें हैं, बिल्डिंग्स केव्स वो सब। और नेचुरल के अंदर नेचर रिलेटेड आ जाएगा। ओके, अगर आपको चाहिए तो ये सारे नाम्स आप मिक्स करके एक लिस्ट बनाओ और फिर आप एक्सरसाइज करो और वहां पे बाजू में लिखते जाओ ये कौन सी कैटेगरी में आ सकता है। Try it out. I'm sure you will manage it. It's very simple. और लास्ट यहाँ पे एक जो कैटेगरी है, एक जो प्लेस है, only one place, okay, which is खांग चेन जोंगा। खांग चेन जोंगा नेशनल पार्क। हम बड़ा है बट इसको याद रखना है, जैसे खान, हम खांग नहीं बोलेंगे, खान, सबको खान याद रह जाएगा राइट, बॉलीवुड में से। फिर चेन, I think there was another actor, something like that, right? So Kang Chen Zonga. Chen Chinese जैसा right? Zonga भी Chinese जैसा ही लग रहा है. So Kang Chen Zonga. Okay? Kang Chen Zonga. Kang Chen Zonga. Kang Chen Zonga. National Park ये mixed category में आता है. Okay? So it doesn't fit into any of these categories. उसका नाम क्या है? वो mixed category है. Okay? Simple. Try out the exercise. Here I have a question for you. Who takes care of cultural heritage? ये जो cultural heritage हम बोल रहे हैं, सारी buildings, caves, monuments जो बोल रहे हैं, उसका ध्यान कौन रखता है? Who takes care of cultural heritage? Hint देऊँगा? Do you remember Sir Alexander Cunningham from second chapter? याद आ रहा है? We had an interview with him. हमने उनका interview लिया था. Yes, he was the first Director General of what? Yes, Archaeological Survey of India. Okay, so cultural heritage का ध्यान कौन रखता है? Archaeological Survey of India. That's one. There are other two also. So Archaeological Survey of India. Cultural heritage falls under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India's State Department of Archaeology. Okay, so एक general overall India का है right, Archaeological Survey of India, and second जो है वो particular state में जो archaeological department है, so India's State Department of Archaeology. Okay, so overall एक इंडिया का और एक दूसरा है वो स्टेट है right, State Department of Archaeology. And the third here we have is INTAC. I for Indian, हम इंडिया की बात कर रहे हैं right. N is national, India is a nation. So Indian National Trust. कोई भी जब डिपार्टमेंट बनता है उसको हम ट्रस्ट बोलते हैं राइट, ट्रस्ट फॉर दिस, ट्रस्ट फॉर दैट. इन्हें हमको हमारे इंडियन नेशनल पे ट्रस्ट है, ये डिपार्टमेंट पे ट्रस्ट है राइट. सो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट, यहाँ पे आर्ट की बात हो रही है राइट, कल्चर जो हेरिटेज इट्स फॉर्म ऑफ आर्ट. सो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज. सिंपल है याद रखना. ओके, सो 3 Archaeological Survey. Come on, say it with me. Archaeological Survey of India, India's State Departments of Archaeology, and INTAC, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. Well, these institutions look after the conservation and preservation, right? We said who takes care of the cultural heritage. उनका care करना है नहीं क्या, उनको conserve करना, उसको preserve करना, right? So this cultural and natural heritage जो है उसका conservation और preservation जो है वो institutions देखते हैं. और उसके लिए उनको कौन चाहिए? They need experts from various fields, right? This cannot be just done by random people. Experts होना ज़रूरी है, right? So this institutions, this departments को ये सारी cultural और natural heritage को conserve और preserve करने के लिए they need experts from various fields. Okay, so who are these experts? These experts are well aware. उनके पास knowledge है किस चीज़ का? They are experts, right? They are aware of cultural, social and political histories of heritage sites. जो heritage sites पे वो काम करते हैं
उसका सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज वो जानते हैं. ओके, सो एक्सपर्ट्स बनना है, ये सब नॉलेज होना चाहिए, राइट? ऐसे ही आप एक्सपर्ट्स नहीं बन जाते हो. So these experts have the necessary knowledge of cultural, social and political histories of the heritage sites. Are we clear? Okay. Let us now understand the factors to consider while working at any heritage site. Institutions जो है वो heritage sites पे काम कर रहे हैं. They have experts from various fields, right? जिनके पास काफ़ी knowledge है. But while working ये heritage site पे काम करने के time पे कौन से factors को ध्यान में रखना ज़रूरी है? You need to be mindful of some factors, okay? So let's understand them. First, खबरदार ओरिजिनल स्टेट को बदला तो. खबरदार, okay? Handle without causing any change in its original state. ओरिजिनल जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए. सो बी केयरफुल. खबरदार ओरिजिनल स्टेट को बदला तो. ओके. सेकंड, व्हाट विल यू सर्वे? The local social structure and psychology of the local people, right? हम locals की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का जो social structure है, वो society कैसी है, वहाँ के लोगों की psychology क्या है, वो survey करना ज़रूरी है. Their current challenges and future expectations. Because you are restoring, you are preserving, आप कोई साइट पे काम कर रहे हो, that heritage is in a particular place and that place has people there, right? So वो लोगों को समझना भी ज़रूरी है, उनका सर्वे करना ज़रूरी है. तो आप सर्वे करके क्या समझोगे? वहाँ के जो लोकल सोशल स्ट्रक्चर है, उनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, उनके अभी करंट प्रॉब्लम्स क्या है, उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी होगी. ओके. नेक्स्ट, खबरदार अगर लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया तो. You have to be very careful. We said psychology of the local people, right? So you cannot hurt the sentiments of the local people. So avoid hurting sentiments of the local people. Avoid hurting sentiments of the local people. अगर उन लोग भड़क गए तो आपका सारा काम बंद हो जाएगा. Okay, so be careful. अरे, wow, you are creating an option for the local people to participate. बहुत बढ़िया. So through this project आप क्या कर रहे हो? You are creating an option for the local people to participate. जब उसका restoration करते हो वहाँ पे काम generate होता है, right? So local people participate. They have economic opportunities now. Very good. ये तो कमाल कर दिया. Designing systematic plans to employ local skills in a creative way and thereby creating better opportunities of livelihood. Very good. Okay. So अभी proper systematic plans बन रहे कि how we can employ local skills. जो लोग हैं वहाँ पे उनमें skills है. Usually जो जगह होती है वहाँ के लोगों में कुछ ना कुछ special skills होती है वो heritage के related. Okay. So you are developing systematic plans. Random नहीं, systematic proper plan to employ local skills. वहाँ के लोगों के skills को employ करना, उसको use करना in a creative way. And then उसकी वजह से क्या होगा, उनको economic opportunities मिल रहे, right? Thereby creating better opportunities of livelihood. पैसे कमाने का उनके लिए एक जरिया आप create कर रहे हो. Okay? So let's repeat all these factors. You have to join me, okay? So are you ready? Let's go. 1, 2, 3. Handle without causing any change in its original state. The local social structure and psychology of the people, their current challenges and future expectations. Avoid hurting sentiments of the local people. Creating an option for the local people to participate, designating or designing systematic plans to employ local skills in a creative way, and thereby creating better opportunities of livelihood.
था ना इजी, बोले ना मेरे साथ में, वेरी गुड। Woohoo! We are on the last subsection of the chapter, affiliated professional fields, and with this, we will finish the chapter. Woohoo! It says that knowledge of history can be supportive in the decision making with regard to respective legal provisions and public policies. Okay? So, ये जो history का जो knowledge है, it helps us in decision making. हमें decision लेने में help करता है. In what? With respective legal provisions. Okay, with respect to legal provisions, legalities की बात हो रही है, law की बात हो रही है, and public policies, लोगों के लिए, right? That's people stay in a society. So the decisions, the policies should be for the people, right? उनकी welfare के लिए, उनके protection के लिए. तो हिस्ट्री से हाँ जो नॉलेज मिलता है उसकी वजह से हम ये लीगल प्रोविजंस बना सकते हैं और पब्लिक पॉलिसीज. इट मीन्स दैट लीगल प्रोविजंस और पब्लिक पॉलिसीज बनाने में दिस नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स. ओके, and with respect to what, when we say that legal provisions and public policies, but for the following fields, they are museums and archives, right? Museums and archives, हम अभी हिस्ट्री की बात कर रहे, राइट? सो म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, काफ़ी हमने पढ़ा इसके बारे में. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, अगर आपके पास मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल साइट्स है, आपके पास वो हेरिटेज है, तो टूरिज्म ऑफ कोर्स होएगा, राइट? वी नो लॉट ऑफ पीपल विजिट इंडिया फॉर दिल्ली, फॉर आगरा, राइट? ताजमहल देखने आते हैं. सो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, entertainment and mass media, right? Because that is part of the heritage, right? Art, it's a form of art. Okay, so museums and archives, preservation and conservation of historical sites, tourism and hospitality, entertainment and mass media. Okay, it's simple, right? So all these fields require experts. ऑल दिस फिल्स जो हम बात कर रहे हैं, म्यूजियम्स है, प्रिजर्वेशन है, टूरिज्म है, एंटरटेनमेंट है, जो भी है उसके लिए हमको एक्सपर्ट्स चाहिए. ओके, एंड हु आर दिस एक्सपर्ट्स? दे हैव स्पेशलाइज्ड स्किल्स. That skill can be in different fields, as we will see, but they have specialized skills. Okay, like architects, engineers, curators, historians, photographers, etc. Right? Architects जो है, and you know their role is in buildings, right? So जो preservation वगैरह है, म्यूजियम्स है, ये सब का ध्यान रखने में, उसको कंजर्व करने में, उसको प्रिजर्व करने में they can help you. So is the case with engineers, right? Curators जो है, जो आप म्यूजियम्स में जाते हैं तो आपको सब इंफॉर्मेशन देते हैं, right? ये है वो है. So they're the curators, historians, photographers, ऐसे the skilled people है, उनकी ज़रूरत है. Okay? Okay. Let us now understand what is expected from these experts. जो सारे experts हैं, architects, engineers, etc., उनसे क्या expectations रखने में आती है? Okay? They are experts, right? So what is expected from them? उनसे क्या उम्मीद है? First, they should have adequate knowledge of the ancient sites. वो जो sites restoration हो रहा है, conservation हो रहा है, preservation हो रहा है, right? तो जो भी sites की बात हो रही है, उनका उन्हें काफ़ी proper ज्ञान होना ज़रूरी है. They should have adequate knowledge, okay? Enough knowledge होना ज़रूरी है. And the second is historical background of the structural remains and artifacts. और ये जो भी उन लोग रेस्टोरेशन कर रहे हैं, जो भी साइट्स है या कोई रिमेन्स है, आर्टिफैक्ट्स है, जो भी है, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ हो रही है, ओके, उनके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके पीछे की जो नॉलेज है वो सारी होनी ज़रूरी है. ओके, सो एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द एंशिएंट साइट्स एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रक्चरल रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स. तभी तो भाई आपको experts बोलने में आता है, right? Otherwise why would you be considered experts? Okay, so this is it. Zala Rizala, chapter Zala. Wasn't that easy, small and quick? Yes, it was. Yay!
So here we are, done with the whole chapter. Wasn't that easy? Do you say that happy history now? Yes, it's very simple. I'll come with more videos for all the chapters. Do keep watching them again and again ताकि आपको वो याद रह जाए बराबर से एक बार देख के छोड़ नहीं देना है बार बार रिपीट करना है आपको बीच में ब्रेक लेना है तो ब्रेक लीजिए पर इसे बार बार देखिए क्योंकि इसमें आपके पास पिक्चर्स है आपके पास वॉइस है तो आपको इजीली ये सब चीज़ें याद रह जाएगी ओके so keep watching and I wish that you score really well in your exams. Thank you very much. Do remember to subscribe so that you get notification when you upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well so that your friends also can know about it.